Namaskar, everyone, and a very warm welcome from the Outlook Responsible Tourism Initiative to all our guests and participants at the first MAHAMEET, which is called Green Goals, Clean Future. This webinar is the first in a series of 6 we will conduct this year in partnership with the Department of Tourism, Government of Maharashtra. In this series, we will look at pressing issues that all stakeholders in the tourism ecosystem face while running their businesses. The purpose of these webinars would be to provide you with simple tools to manage these issues, and we will collaborate with experts from across India to address these very important topics that will help you all to run your businesses more efficiently, keeping in mind the preservation of the environment and local biodiversity, as well as the needs of the new age traveler. We are also delighted to announce that we will conduct and host the first Indian Responsible Tourism State Awards in Maharashtra in partnership with the Department of Tourism. Do keep a tab on our social handles for the announcement of the next webinars and the awards. Before we start, a few housekeeping rules. You can put down any questions that you may want addressed in the Q&A box on the screen. We will address some of these post today's session. Today, we are very honored to have Dr. Soumya Prasad with us. Dr. Prasad is an applied ecologist working in the Himalayan ecosystems. She's based out of Uttarakhand, but has worked extensively in the Western Ghats. She has led the Garbage Impacts Research and Awareness Program with the Nature Science Initiative. Her current areas of work focus on developing tools for communicating impacts of plastic on human health for different age groups and demographics, developing activity-based nature-centered ecology curriculum for school children, and also raising awareness about impact of improper disposal of plastic waste on wild and domestic animals. Dr. Prasad, welcome. Thank you, Sonali ji, and to everyone who's joined this meet today. I'm really very excited to be part of this and to share some of our learnings from our journey with a zero waste lifestyle. Okay. For us, it's been a personal quest, okay, for my husband and me to see how we apply ecology to every dimension of our life. And then as ecologists to take that back into the work frontier and to kind of share our learnings with a broader audience has given us some of the most exciting years of our lives. Okay. आज मैं हमारे कुछ learnings जो है आपके साथ share करने की कोशिश करूँगी. बहुत हार्ड साइंस से आ रहा है, उसको बहुत सिंपल वे में लाने की कोशिश कर रही हूँ. कुछ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज क्वेश्चंस. I'm very excited to be with an audience from Maharashtra, जहाँ हमारे पास इतनी डीप एक हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज हो या कल्चरल हेरिटेज, एक बहुत ही गहरा संबंध है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ. एंड आप कोई भी इकोलॉजी एनवायरनमेंट इशू देखेंगे, लोकल सिटीजन एक्शन महाराष्ट्र में जितना है कहीं और हमें शायद दिखता नहीं है. एंड अगर कोई एक जीरो वेस्ट मूवमेंट आएगा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के तरफ, मुझे लगता है वो रेवोल्यूशन महाराष्ट्र से शुरू होना चाहिए. क्योंकि इतने लीडरशिप है यहाँ पर. महाराष्ट्र के जो टूरिस्ट आते हैं उत्तराखंड, जहाँ मैं अभी बेस्ड हूँ, they are the most welcome. उत्तराखंड के जो टूर ऑपरेटर्स है, होम स्टे ओनर्स या होटल ओनर्स, महाराष्ट्र के टूरिस्ट को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग जब वेल बिहेव, ज्यादा लिटर नहीं करते हैं एंड बहुत रेस्पेक्टफुल होते हैं टुवर्ड्स नेचर एंड कल्चर. And this, in Uttarakhand, we find that a lot of people coming from Maharashtra fall into this category of eco travelers. And ये community जो है हमारे देश में भी बढ़ रहा है, ये conscious eco traveler community, जो उनको AC वाला कमरा या फैंसी टीवी या कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले होटल मॉडल तो नहीं चाहिए. एंड इको टूरिज्म मॉडल्स लो इन्वेस्टमेंट होते हैं, हाई रिटर्न्स,
एंड उनके पीछे कोई कचरा या टूर ऑपरेटर का कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। बट जो हमारे जो इको ट्रैवलर्स हैं उनके अपनी ही कुछ कई सोच और रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड उनकी एक ये माइंडसेट जो है, उनका जो थिंकिंग है, सोच है, उसको थोड़ा सा आज एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज दैट नॉलेजेबल इको ट्रैवलर, इंडियन हो या फॉरेनर हो, उनकी माइंडसेट क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, आज सोचेंगे। उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगी। ये जो एक फोटोग्राफ है आपके स्क्रीन पे, ये एक ऐसी टूरिस्ट हॉटस्पॉट से है जहां पर प्लास्टिक बैन काफी टाइम से इम्प्लीमेंट हो रहा है। वहां पे भी चैलेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन में, बट काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई विच इज दिस टूरिस्ट हॉटस्पॉट? लोनावाला है, ऊटी, मसूरी या माउंट आबू? कैन यू प्लीज टेक अ लुक एंड टेल मी वेयर इज प्लास्टिक बैन बीइंग इम्प्लीमेंटेड? जैसे आपने सबने सुना है, आजकल हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक के कण इकट्ठा हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक इज एक्यूमुलेटिंग इन आवर बॉडीज, खासकर हमारे ब्रेन, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स यहाँ इकट्ठा हो रही है। एंड अभी साइंटिस्ट बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से पहले कंपेयर करें तो अभी जो है हमारे बॉडी में डबल क्वांटिटी हो गया माइक्रोप्लास्टिक आजकल के। एंड साइंटिस्ट ने ये भी अभी रिसेंटली पता किया है कि माइक्रोप्लास्टिक आपके ब्लड वेसल्स, आपकी आर्टरीज में घुसने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जो रिस्क है डबल हो गया है। ओके, एंड अगर आप इंडिया से भी डेटा देखेंगे या पूरी दुनिया से किसी भी देश से, आप देखेंगे कि अब स्ट्रोक की जो इंसिडेंस है यंग अडल्ट में, 20 से 50 साल की एज में, वो यंग अडल्ट में बढ़ रहा है। ओके, बट इन सीनियर सिटीजन 60 प्लस, द स्ट्रोक इंसिडेंस इज कमिंग डाउन ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बट ये यंग अडल्ट्स में पूरी दुनिया में why is stroke incidence going up? Okay, is this linked to microplastic exposures? One of the main areas of research these days. Okay, and ये सोचने की बात है। Okay, अब माइक्रोप्लास्टिक के अलावा जो हमारे पैकेज फूड है, पैकेज बेवरेजेस है, they release a lot of toxic additives such as BPA, phthalates. Okay, प्लास्टिक खुद हानिकारक नहीं है, इट्स अन इनर्ट सब्सटेंस। ओके, बट उसमें उसको रंग देने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंसी या हार्डनेस या सॉफ्टनेस देने के लिए उसमें 5 से 6 हजार टाइप की एडिशनल केमिकल्स डाला जाता है। ओके, इनमें से लगभग 25% हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ओके, बट 4-5 ऐसे केमिकल है जिसके बारे में बहुत रिसर्च हुआ, 50-60 साल की रिसर्च है ऑन बीपीए एंड थैलेट्स। हमें पता था, बहुत पहले से पता था कि इंसानों के मुंह में या इंसानों के शरीर में या किसी भी जानवर के शरीर में ये केमिकल घुसना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक है। अब ये क्यों है, खतरनाक क्यों है, देखते हैं आगे। okay. अब ये जो दृश्य है आपके सामने, ये जो प्रोडक्ट्स है, लाइक हाउस होल्ड क्लीनर्स, टूथपेस्ट, मीन बिस्किट्स, स्नैक्स, लाइक ऑल द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, डिब्बास, ये तो हर घर में, हर बिजनेस में, हर जगह ऑपरेशन में घुस चुका है। ओके, इधर कुछ मेटल के टिन्स भी है। Now, can anyone identify any one product in this picture which is safe for your consumption, which is safe for your body, which is safe for your family? Just take a careful look, ध्यान से देखिए। Unfortunately, इसमें कुछ भी नहीं है जो हमारे लिए सेफ है। इन सब में जो है बीपीए है, इंक्लूडिंग द मेटल टिन्स या एल्यूमिनियम फॉइल, जिसके अंदर एक कोटिंग होता है, थिक लेयर ऑफ बीपीए का कोटिंग, सो दैट इट बिकम्स अ नॉन स्टिकी सर्फेस। अब कई जगह जो है बच्चों के, खासकर बॉटल या चिल्ड्रंस प्रोडक्ट्स पे बीपीए फ्री की लेबलिंग आ चुका है, इंडिया में काफी, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ रहा है कि हमारे लिए बहुत हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। बट मैन्युफैक्चरर ये नहीं बता रहे कि बीपीए की जगह उन्होंने और क्या ऐड किया उसको ट्रांसपेरेंट या फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। बीपीए जगह ज्यादातर मैन्युफैक्चरर बीपीएस डाल रहे, बीएस फिनॉल सल्फाइड, जो बीपीए से भी ज्यादा हानिकारक है। बट डीपीएस जो है
उसके बारे में इतना रिसर्च नहीं, उसके बारे में कोर्ट कचहरी में इतनी वो कार्रवाई नहीं चला है। ओके, तो इसलिए जो है मैन्युफैक्चरर्स कैन गेट अवे विद, बट जस्ट रिमेम्बर, ओके, नन ऑफ दीज थिंग्स आर सेफ फॉर यू। जब हम प्लास्टिक में खाना या जूस या बेवरेज पैक करते हैं, ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हेन इट वाज पैक्ड, कितने महीनों से उसमें बैठा हुआ है, किस टेम्परेचर पे बैठा हुआ है, वो एसिडिक है या वेदर इट इज हैविंग लॉट ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स, ओके, द क्वांटिटी ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, बीपीए, थैलेट, लीचिंग वेरीज। ओके, जितना पुराना है, जितना एसिडिक है, या जितना उसमें फैट कंटेंट है, लीचिंग ज्यादा होता है बीपीए थैलेट का खासकर। ओके, एंड हमें ये भी पता है कि जो स्मॉलर पैकेजिंग है, छोटे छोटे पैकेट्स का जो आता है, जूस, बिस्किट, चिप्स, नमकीन 5-10 रुपए का जो आता है, उसमें बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक और बीपीए थैलेट मिलेगा कंपेयर टू द लार्जर पैकेट। ओके, क्योंकि छोटे पैकिंग में प्लास्टिक ज्यादा और खाना कम है। और खासकर अगर आप कोई टूर ऑपरेटर हो, लंबे लंबे ट्रैक के लिए जा रहे हो, तो काइंडली टेक द लार्जेस्ट पैकिंग पैकेट पॉसिबल, 1-2 किलो का मिनिमम, okay? ताकि जब आप इसको सर्व करते हो, टॉक्सिक कंटेंट जो है थोड़ा कम रहे। okay? ये हमारे घर में भी सोचने की बात है, बच्चों के हाथ में क्या दे, ये छोटे छोटे पैकिंग जो है उनके हाथ में घुसने दे या ना दे। okay? ज्यादा रंगीन, ज्यादा टॉक्सिक, क्योंकि रंग लाने के लिए कई केमिकल्स, स्पेशली हेवी मेटल्स ऐड करते हैं प्लास्टिक्स में। okay? सो ये जो आपके सामने ये जो सफेद रंग की प्लास्टिक दिख रहा है, ओके, थर्माकोल या स्टाइरोफोम एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक है जो जहां पर खुद प्लास्टिक ही हानिकारक। 1982 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्रुप बी कार्सिनोजन बोला और बताया कि इंसानों के यूज में ये सेफ नहीं है। ओके, बट अभी 10-15 साल में पूरी इंडिया में आप देखेंगे इसमें चाय, कॉफी, खाना सर्व हो रहा है, एंड लोग सोचते हैं सफेद है तो साफ है, okay, but it's extremely dangerous for us. Okay. Scientists believe that our body is now about 1 to 3% plastic. कि ब्रेन में around 0.5% plastic by weight. Okay. An average adult human being of 61 kgs has somewhere around half to 2 kgs of plastic already accumulated in their body. Okay. And your plastic, as I explained earlier, it is distributed in your brain, in your lungs, in your blood vessels, in your liver, everywhere. Okay, and it's causing great harm. आपको पता है क्या ये प्लास्टिक टॉक्सिन हमारे लिए क्यों हानिकारक है? I mean, I told you about a bit about microplastics, but ये बीपीए और थैलेट इसमें what is the risk? Okay, जो बीपीए और थैलेट है, these are hormone inhibitors. ये आपकी शरीर में जो हार्मोन्स है उसको जो है रोक रहा है। आपके जो हार्मोन है वो बहुत कम संख्या में आपके शरीर में घूम रहा है। जैसे ब्रेन से निकलता है, एक छोटी सी ग्लैंड है, उससे निकलता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बच्चों में, और आपकी हर एक अंग में घुस रहा है टू योर फिंगर टिप्स एंड मेकिंग यू ग्रो। जहां वो ग्रोथ हार्मोन को बैठना है आपकी बॉडी को, शरीर को बढ़ाने के लिए, वहां जाके बीपीए बैठ गया तो बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी? ये वाली इशू हम बच्चों में देख रहे हैं पूरी इंडिया में। ओके, सिमिलरली विद हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायराइड, बीपीए एंड थैलेट ब्लॉक देयर एक्शन। ओके, अब हमारी शरीर में वी हैव हायर concentration of BPA and phthalates than circulating hormones today. If I were to test any of your urine or blood, okay, एंड ज्यादातर ये बीपीए और थैलेट आपकी खून में घुस रहा है खान पान से। okay. हाँ, हवा में भी है, पानी में है, धरती में भी है, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठो उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, प्लास्टिक का पंखा चला उसे रिस्क नहीं है, बट ये जो सुबह उठ के ब्रेड, ये रस्क, बिस्किट, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, नमकीन, दिन भर बॉटल्ड वाटर, जूसेस जो हम लेते रहते हैं, उसमें इतना डोजिंग हो रहा है। Of course, you release a lot of it in your urine, but you're still storing a lot of BPA in your liver and through that into your bloodstream. In adult men and women, BPA exposure, phthalate exposure is linked to infertility issues. डॉक्टर्स जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो बताते हैं मेल इनफर्टिलिटी इज अ पैंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया।
It's not just India. Across the world, we have male infertility issues. It costs a lot of money now to address this. Okay, both in men and women, BPA and phthalate exposure is linked to obesity. In women, in young girls, BPA is linked to early onset puberty, PCOD in women, leading to miscarriage. Now, India में fertility last 10-15 साल में बहुत तेजी से गिर रहा है. How much of this is due to socioeconomic factors or policy versus toxic chemical exposure is something we need to explore. Okay. If it was just left to our bodies, हाँ हमारी वो शरीर में कुछ problem आ रहा है, then okay, we may think of various ways of dealing with it. But आगे जाके next generation पे जब असर पड़ रही है, तब हमें सोचना पड़ता है. Okay, अगर बचपन में या adolescence में if their mother or father had a lot of junk food or used lot of cosmetics, personal care products like sunscreen, etc., जिसमें ये phthalate BPA बहुत ज्यादा होता है. Okay, then आगे जाके जो है genetic changes की वजह से आपके बच्चा जो है it can be born with autism या ADHD. मंदबुद्धि के बच्चे पैदा हो रहे. अब और ज्यादा पैदा हो. अब इस दशक में around 1 in 30 children is being born autistic in India. Scary, okay? The previous decade it was somewhere around 1 in 40s. उससे पहले देखेंगे तो 1 in 50s या 60s. अब autism prevalence बढ़ रहा है. बहुत गंभीर विषय है because ये जब ब्रेन की वायरिंग चेंज हो जाती है गर्भ में, आगे जाके आप कुछ भी करें, थेरेपी कराएं या ट्रीटमेंट लाएं, some of these things you cannot change. Okay, it's hardwired. So children are at the highest risk. Okay, in that 0 to 6 age group, when their brain is growing very rapidly, childhood is now surrounded by plastic toys, plastic water bottles, and a lot of packaged food. This leads to lowering of IQ, attention disorders, hyperactivity. You will see so many hyper children in any school these days. Early puberty, a lot of other health issues. Okay. When an eco-conscious traveler is coming into your landscape, वो तो सबसे पहले सोच रहा है अरे भाई मेरा कितना पड़ेगा इस बार माइक्रोप्लास्टिक या बीपी. ओके, मेरी एक फ्रेंड है कोलीग रिद्धिमा करवा, वो हमेशा कहती है अरे चिंता मत करो यार, मेरे हाथ में मेरे बैग में हमेशा जीडीएस रहता है. जीडीएस क्या है? ग्लास डिब्बा स्पून. इससे तुम बच जाओगे, तुम्हारे आगे की पीढ़ी पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा. चलो मैं दिखाती हूँ, घूमते हैं, चलो चलो ये एक्सप्लोर करते हैं कैसे हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस को सेफ गार्ड कर सकते हैं. क्या है स्ट्रेटेजीज टूरिज्म सेक्टर के लिए? ओके, सबसे पहला आई थिंक स्ट्रेटेजी जो इंडियन ट्रेडिशनल अप्रोच है, हम फ्रेश खाना खाते हैं. प्रोसेस फूड्स हमारे ट्रेडिशनली जो है इतना यूज नहीं होता था. okay? एंड हमारे हर स्टेट में हर स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज में इतने सारे टाइप के डाइवर्सिटी ऑफ खाना है. ओके, and we love to serve our food, we love to show our culture, and by cooking and serving in steel या brass या पीतल में ना, plastic can be avoided. Secondly, also serving in steel or other metalware kills bacteria and viruses. Okay, so go back to cooking and serving your traditional food. Don't use this processed foods, don't use these frozen foods. Okay, food is more delicious when it's served in metal plates or katoris. And traditionally जैसे हम कपड़े में wrap करते थे, wash and dry in the sun in UV. It is the most antibacterial way to serve rotis. Okay, and खासकर जो ये bottles है पीतल के हो या स्टील के या कांच के, they're much safer, more durable और लंबा चलता है प्लास्टिक से ज्यादा. Okay, so आपकी सेविंग्स भी काफी होती है. Okay, ये जो डिस्पोजल है प्लास्टिक के, प्लीज अवॉइड कीजिए. इसके जगह हमारे पास ट्रेडिशनल इतने सारे टाइप के पत्थर, इतने सारे लोकल टाइप के लीव्स हैं जो हर एरिया में, पूरी इंडिया में हमने ये टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया को दिया है. अब हमारे पास बगास या एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये जो शुगर केन वेस्ट है, उसके भी पत्तल बन रहे हैं. बहुत सारे ऑप्शन है कि अवॉइड करना है तो. एक छोटा सा सजेशन हम देते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री को कि रिप्लेस योर टेट्रा पैक मिल्क विथ मिल्क पाउडर. It will give you a lot of economic savings, also lower toxin load for you and for your clients. Okay,
Another suggestion and another like solution that we have promoted in the tourism industry is to ask clients to carry their water bottle, ग्लास डिब्बा स्पून GDS. ओके, ये जो डिब्बा है ये कटोरी भी बन जाती है, प्लेट भी बन जाती है, स्पेशली ऑन योर हाइक. ओके, एंड अगर आप इसको अपने पैकेज में इंक्लूड करें, इस पे आप अपना लोगो वगैरह डाल के अपने प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नहीं तो अपने ये मर्चेंडाइज अपने लोगों के साथ बनवा के आप इसको सेल पे भी रख सकते हैं. Okay, it's really excellent branding for sustainable, responsible tourism. Okay. Many tour operators, many hotels, homestays provide now zero waste toiletry kits, be it bamboo toothbrush, yeah, natural soaps, okay, menstrual cups, cotton handkerchiefs and towels. Okay. ये तो अब काफी जगह यूज होने लगा है. अगेन ये भी ब्रांडिंग और प्रमोशंस के लिए बहुत एक सरल एक यूज मीन फुल स्ट्रेटजी है. कॉस्ट को भी लोअर कर सकता है इन सम वेज इफ यू बाय इन बल्क and focus on branding. Okay. So एक और strategy में देख रही हूँ पूरी महाराष्ट्र में काफी popular है, which is composting and growing vegetables. Okay, not only does it lower costs, it gives your client, your tourist, a really authentic flavor of local cuisine, and it makes management of your प्रॉपर्टी मच इजियर जब आपके होम खेत से वेजिटेबल्स एंड कई ग्रेन्स निकल के आ रहे फ्रेश. ओके, especially for tour operators or even for hoteliers and homestay owners, I would urge कि हम अपने own traditional जो ये travel food है, प्रीमिक्सेस है कई टाइप के, पोहा प्रीमिक्स, उपमा प्रीमिक्स, चटनी का है, या खिचड़ी और खड़ी का भी प्रीमिक्स हमारे यहाँ बनता है, कई कई टाइप के. इतने सारे टाइप के लड्डू है जो आपकी वो एनर्जी बार से बेहतर है, उसमें कोई टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स नहीं, इतने सारे टाइप के स्नैक्स है. ओके, जो हम जो है अपने लंबे ट्रैक और फील्डवर्क के लिए भी ले जाते हैं. अभी अभी मैं 15 दिन एक लॉन्ग फील्ड मीन ड्यूटी से निकल के आ रही हूँ, एंड फॉर द एंटायर ट्रिप आई हैड टेकन प्री मिक्सेस, okay, for my team, a very large team of people, in कपड़े के पोतली एंड सम डिब्बास. ये पोतली और डिब्बे भी रास्ते में मेरे काम आए काफी. Okay, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और कॉस्ट भी बहुत बचाता है. कोई लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ टाई अप कीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए, एंड आपका अपना ये प्रिजर्वेटिव फ्री, पेस्टिसाइड फ्री ट्रेडिशनल खाना आपका इतना अच्छा अच्छा बन के आएगा. okay. ये एक और सोल्यूशन है जो कई हमारे होटेलियर्स खासकर प्रमोट करें, अपने आसपास के दुकानों को जो है प्रमोट करें कि लोकल हेल्थी स्नैक्स प्रोवाइड करें इन प्लेस ऑफ पैकेज फूड्स. ओके, कुकीज हो, चकली हो, या आपके चिवड़ा वगैरह, अगर वो अट्रैक्टिव वे में ग्लास जार्स में, जैसे ट्रेडिशनली महाराष्ट्र में ग्लास जार्स में सर्व होता था दुकानों में, ओके, इन अ क्लीन वे आप प्रोवाइड करेंगे, यू कैन चार्ज यू द टूरिस्ट कस्टमर्स गुड अमाउंट ऑफ मनी. ओके, कुकीज जो एयरपोर्ट में इतना महंगा बिकता है, आपको भी उस उतने आसपास पैसा मिलेगा अगर आपने अच्छा सा सुंदर सा साफ सुथरा रखा और सर्व किया. फ्रेश स्नैक्स में आपका बिजनेस में और रिटर्न मिलेगा. okay. हाँ, फिर भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ प्लास्टिक निकल के आता ही, कहीं ना कहीं से आता है, आजकल ये मॉडर्न लाइफ का रियलिटी है. मेरी एक ही विनती है सबसे कि डोंट, इसको ना कहीं फेंको मत, इसको किसी भी वेस्ट कलेक्शन एजेंसी के हाथ मत दे. क्या करेंगे वो लोग, आपसे लेंगे, आपसे पैसा भी लेंगे वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, वो जाके आगे वाली घाटी में, नदी में कहीं फेंक के आए, लैंडफिल साइड पर मत फेंक, कभी भी जलाना मत. नेवर बर्न प्लास्टिक. जब प्लास्टिक जलाते हैं उससे जो धुआं निकलती है ना, इट हैज दिस वेरी हेवी मॉलिक्यूल्स, वो उड़ के नहीं जाते हैं. ओके, दिस आर कॉल्ड परमानेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, पीओपीज. वो आसपास की हवा में ही घूमता रहता है. सरकारी नौकरी से भी लंबा परमानेंट है, साथ साथ पीढ़ियों तक आपको परेशान करेगा. एंड उसकी जो दुआ है, उसकी जो खुशबू है, एक इंडिया की आइडेंटिटी बन चुकी है. जैसे ही फॉरेन टूरिस्ट आता है वो कहते हैं इतना पोल्यूटेड है, आपकी सुंदर सी जगह भी इतनी पोल्यूटेड. आप अपने उन डेस्टिनेशन को खराब कर रहे हो अगर इसको जलाया आपने प्लास्टिक को. कोई अगर जला रहा है इमीडिएटली रोको,
बहुत सिंपल, बहुत एक आसान सोल्यूशन मैं आज आपको समझाऊंगी। और भी सोल्यूशन है, बट जो हम अभी प्रमोट करें ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। इकट्ठा करो, साफ ये कूड़ा प्लास्टिक आपने इकट्ठा किया, साफ रखा, उसको मिट्टी में, पानी में, किसी कचड़े में नहीं डाला, didn't mix it with wet waste, then you can make something really useful called eco bricks. It's a really quick local solution. प्लास्टिक का कूड़ा उठाओ, 4-5 कट्टे अगर आपने इकट्ठा किया, एक इको ब्रिक बनेगा 1 लीटर बॉटल का। ओके, उसको काटो और एक डंडा लेके 1 लीटर के बॉटल में दबाते जाओ, 15 से 20 मिनट में आप 1 लीटर का बॉटल बस। ओके, आपकी ऑफ टाइम में अगर आपका थोड़ा सा बड़ा सा ऑपरेशन है, अपने स्टाफ के साथ बहुत बड़ी जल्दी से आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं। ओके, अभी जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरी पर्स में या मेरी बैग में हमेशा एक छोटा बॉटल रहता है, 20 या 200 या 250 ml, जो स्प्राइट या पेप्सी का बॉटल मैं कहीं कूड़े की ढेर से उठाती हूँ, साफ करती हूँ, और उसमें जो भी ट्रैवलिंग टाइम में मेरी या मेरी टीम की जो प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उसको मैं भरती जाती हूँ। ठीक, उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। छोटा बॉटल 200-250 ml में भी 100 से 150 पैकेट हम डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पैकेट। ओके, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फिल इट। अगर घर लेवल पे, फैमिली लेवल पे कोशिश करेंगे तो इट टेक्स अबाउट अ मंथ टू फिल अ 250 ml बॉटल। ओके, एंड 1 लीटर का बॉटल जो है उसमें बहुत सारा कूड़ा दिखता है, घुसता है। इससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं। इको ब्रिक से हम बहुत सुंदर सुंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ओके, instead of these mountains of waste blocking our beautiful views in the ghats, we can set up a bench with that plastic waste looking at that view. Okay, EcoBrick is a very useful monitoring tool for tourism. Whether you are from the tourism department or you're a hotelier, you can use this as a monitoring tool to see how much plastic waste is being recycled, कितना EcoBrick बना है। एजुकेशन सेक्टर में भी हम देख रहे हैं बहुत ही यूजफुल टूल है। घर घर में आदत लगाना बहुत आसान है। ओके, आप हायर एजुकेशन में भी ये सारे प्रैक्टिसेस लेके आ सकते हो। रूरल डेवलपमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है। इट गिव्स अ वेरी मीनिंगफुल रूरल एम्प्लॉयमेंट, वेरी क्विक, वेरी सिंपल, वेरी लोकल सोल्यूशन। उठा के कूड़ा इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने से, just transferring the problem elsewhere, this is giving us a solution, a very localized solution. Okay, अगर ये सब हमने अपनाया, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स वी गेट, लाइक कंपोस्टिंग, या आपकी एक ट्रैवल प्रीमिक्सेस हो, या मिल्क पाउडर वाला स्ट्रेटेजी। बहुत सारे और स्ट्रेटेजीज पॉसिबल है। एक बार आपके दिमाग की बत्ती जल गई तो बहुत आप सोल्यूशंस ढूंढेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, इको ब्रिक, इको ब्रिक, इको ब्रिक, आपकी एक यूजफुल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, बहुत कॉस्ट बचाएगा कंस्ट्रक्शन का, एंड आपकी पूरी लैंडस्केप को सुंदर रखेगा। Okay, I mean, we have seen that tourism businesses can increase the revenue by 5 to 10% at least if they start adopting zero waste strategies. Much more if you want to explore further. And we are now trying to think of a research project to see how much tourism businesses benefit by adopting zero waste strategies. Okay, but most importantly, जो भी local communities tourism में involved है, वो इतना मेहनत लगा रहा है फॉर देयर ओन फैमिलीज, फॉर देयर चिल्ड्रंस वेलफेयर। जब हम ये जीरो वेस्ट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हैं अपनी लैंडस्केप में, जब पोल्यूशन और प्रदूषण और वेस्ट कम करते हैं अपनी कम्युनिटी में, हमारे बच्चों की हेल्थ और उनकी जो फ्यूचर है सेफगार्ड कर रहे हैं। उनके ऊपर इतना टॉक्सिक प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक का कूड़ा जलाने का असर नहीं पड़ी, तो वो आगे जाके जो कुछ काबिल बन सकते हैं, उनकी जो आगे की पीढ़ी सेफगार्ड करेंगे, that's probably the biggest benefit will lead more than the economic benefits. Okay, course a lot of economic benefits. You will save costs. आपकी कोई भी रेगुलेटरी कंप्लायंस में ये काम आएगा, खासकर अगर आप फॉरेन टूरिस्ट के साथ, टूर ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करना चाहते हैं। आप मार्केट में भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकते हो, प्रमोटिंग दी स्ट्रेटेजीज, शोकेसिंग देम। Okay, and resource efficiency, not just in terms of cost saving, but also in time. Okay, you can save a lot of time. You can become much more efficient by adopting zero waste strategies. हाँ, थोड़ा बहुत सोच लगाना पड़ता है, चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स वेरी मच पॉसिबल। इंडिया में ये बहुत आसान है, विदेश में बहुत मुश्किल है। So start your attempts, share your journey, like spread the word, और लोगों को अवेयर कराओ। एंड कुछ अगर मदद चाहिए तो हमारी वेबसाइट है डू नो थ्रैश,
और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं ऑनलाइन जो आप सीख कर सकते हो. And we stop here and take your questions. Thank you so much, all of you, for joining us today. Thank you so much, Soumya. That was so insightful and easy to implement solutions for everyone in the tourism industry to adopt. And, as you said, change takes a while, but we are hopeful. So I'm going to take a look at the questions that have been coming in and raise some of these to you. So there's a question from the Bhim Shankar Wildlife Sanctuary. They ask, we have dustbins everywhere in our village. Plastic gets collected there. How or where can we dispose that huge amount of plastic thrown out by visitors? Actually, dustbin जो है, as long as we are able to collect clean plastic, okay, अपनी पंचायत की तरफ से, अपनी लोकल कम्युनिटी की तरफ से, टूरिज्म सेक्टर के लोगों के साथ, आप एक दिन में एक लेबर के साथ even like 50 khattas of plastic, you can very quickly convert to eco bricks. Okay, so it's really easy and really simple. Okay. Mhm. I mean, it's very much doable. It takes very little time. Off season में, बरसातों में, एक दिन आप निकालो, सारे के सारा कूड़ा अगर आपने साफ रखा है, कहीं एक जगह इकट्ठा किया है, तो बड़ी जल्दी आप कुछ यूजफुल बना सकते हो. In some places, we're trying to promote the selfie point. You can use a grill work or a brick work to design I love Lonavala, using eco bricks. Okay, and it becomes a very attractive point for tourists to come and take a selfie. Can do various creative things with eco bricks. I hope that answers the question. And a quick, note to all attendees. If you've raised your hand, just type in your question in the Q&A section, and we'll see how many of these we can address. There is one question, just give me a minute, on water purifying bottles. Are there any globally trusted brands that offer any safe drinking options so that we can reduce the number of plastic bottles on our trips? See, the best, I mean, when you look at the research on packaged drinking water, it's quite scary. Okay. One of the papers I read said it is safer to drink toilet bowl ka pani than packaged drinking water. Whether you look at microplastic load or bacterial load, every year in India, we have gastroenteritis outbreaks in summer linked to packaged drinking. So it's much safer anywhere where you are to either go for tap water or filtered water. You can also use potassium permanganate or other tablets to purify water if you're in a very remote area on a trek. Okay, if you feel like, okay. But I mean, any day, any of these options, tap water, stream water, clean with some potassium permanganate, okay, or filtered water, it's much safer than packaged drinking water. And I would think that use glass, steel, or copper bottles for your Exactly. drinking Steel water. or copper bottles, when you travel, you can reuse them. And as I said, it's a very useful branding merchandise for you. Or you could ask your guests to bring along their bottles. And it's fantastic. I mean, it's fantastic. Okay. Okay. That's another question. Are fiber dishes okay for meals? Fiber, you mean melamine? Or melamine, that hard plastic is not okay for serving meals. Sorry. And the repeated use, repeated washing actually means more microplastic and toxins from melamine migrate to food. Okay. By fiber, if you mean bagasse, or if you mean, we have other kinds of leaf plates from palm leaf plates. By fiber, if you mean that, those are probably safe. Okay. I don't know what you mean by fiber. Okay. And as you said in your presentation, thermocol is really, really bad for health. Really, one of the most toxic things to serve food in. Okay. Mm-hmm. Yeah, it's better to offer them some poison rather than put them food in. Yeah. Thermocol. Okay. There's another question. To implement proposed changes in behavior, what role can the local communities play? There's a huge role that local communities can play, and we run this program called Nature Vidya. A lot of our content, almost all our content, is in Hindi and English, and it can be translated to Marathi as well if we can find local Maharashtrian partners.
There is a huge role we can all play in raising awareness, working with educational institutions, be it schools or colleges. Everywhere we need basic life skills for modern age. Okay, how do we navigate this very complex landscape? Today, packaged foods, take up around 50 to 60% of the Indian household food budget. Yeah, it's very worrying. We went from our society, which had such diversity of food, now to going more and more reliant on packaged food. And it's very toxic for us, for our coming generation. Okay, so yeah, there's a lot of work to be done, and we need more hands on the deck. There's another question. How can we reduce chemically made cleaning materials like toilet cleaners, floor cleaners? How can we utilize bioenzyme for this purpose? I love this question. Okay. And bioenzymes are extremely powerful. You know, there's research from IIT Kanpur, other agencies showing you can use them in tanneries, in leather industries for cleaning. And there are so many local groups across Maharashtra, I'm sure, which are making juices of various kind. The byproduct, the peel, can be used to make bioenzymes, and they are so efficient. They are so easy to use. You can make it yourself. Yes, of course, it needs a mindset change. The problem is the consumer. For the tourism industry, it will bring in a lot of cost saving. Okay, and I mean, we can do a seminar exclusively on bioenzymes and spend like a whole day doing this. Okay, there's so much savings to be gained. But yeah, if you want to bring it into households, daily usage, we need lots of people joining in to raise more awareness, doing more workshops, making these products available in stores, not just as some exclusive eco-free kind of situation. Okay. There's another question. Will EPR or extended product responsibility cover the microplastic menace or lead to innovation in packaging? I think there is a lot of research on innovation in packaging, and a lot of brands are shifting because of consumer pressure. Okay, we are a very large democracy, and things work very, very, very in a very complex ways in our country. Look at your cigarettes. I mean, even after years of research, you just have a warning on the package. It's up to you whether you want to buy cigarettes or hookah, right? So, similarly with plastic packaging, a lot of research urges that we need manufacturers to declare how dangerous they are to us. But even if we declare it, it needs a lot of awareness among people to kind of, you can make your choices. You go into the shop, kisan ka jo hai, glass may be ketchup available hai, thoda mehenga hai. You can buy some cheap ketchup in a plastic pouch also. The decision is for you, for your family, and for your well-being. What do you want to choose is your decision. Okay, आपके सामने ये सब हमारे देश में ये सब अभी भी अवेलेबल. ओके, सरकार ने ये नहीं कहा कि प्लास्टिक में ही बिकेगा, सब कुछ अवेलेबल है ऑल्टरनेटिव पैकेजिंग में. आप डिसीजन लो, आपके लिए क्या चाहिए, आपकी फैमिली के लिए क्या चाहिए, एंड ये अवेयरनेस बढ़ाओ. डोंट जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ. There's another question, Soumya. Someone who's looking for alternative materials for products packaging, which can be anything from food items to generally everything that we buy or we order online comes in plastic packaging. How can we avoid that? What is the best way to package stuff? See, like in our own personal journey, my husband and I, every decision we make, we constantly question each other. ओके, ये ब्लिंकिट से दही मंगवाओगे तो वो प्लास्टिक में आएगा. चलो मैं डब्बा लेके जाता हूँ, दही लेके आ. हाँ, okay. So there is, every day, every decision you make, we have alternatives available. Now, in the long run, those alternatives are going to benefit me both in terms of cost and time. Okay, and I mean, health benefits are crazy. I mean, you look at the research on health costing because of plastic exposure. Okay. In terms of alternatives to plastic packaging, manufacturers will only shift if there is demographic pressure. More aware citizenry will lead to shift in manufacturers. The alternatives are already available from the research end. Manufacturers will shift if we demand, and the demand has to come from all of us. And are there any organizations that are kind of leading this change and putting pressure? See, unfortunately, in India, there are many organizations who have taken this up, gone to court, various situations are there. But Indian packaging, year after year, we see research coming out. Indian packaging remains some of the most toxic in the world in terms of phthalate loads or BPA loads. Leave aside packaging.
Even products like diapers and sanitary pads have some of the highest phthalate loads in the world. Our products compared to anywhere else in the world. Our regulatory mechanisms for these chemicals is very poor, and that's something. I mean, it's very complex to navigate this. A lot of groups work on it, but it's very very difficult work. An associated question with this, when we talk about smaller hospitality businesses like homestays, B&B, even hotels, there's a lot of leftover food that one Yes. has to deal with. Many organizations we know donate the food to the needy, Yes. the bio waste is composted. But when you have to save the food, refrigerate it for some time, is it better to use? And that is where, you reach for the aluminum foil or the cling wrap. Is it okay to use beeswax paper? What are the alternatives really to cling wrap and aluminum wrap? See, like हमारे यहाँ traditionally हम sun dry करते थे many of the vegetables when they're in season. In each part of the country, we have traditional drying methods which saved produce. We make wadis, various things in certain months. Mhm. We also have other ways of preserving the various dals and products, roasting them, powdering them. And I would urge अगर कुछ भी बचा है स्टील की कंटेनर्स में ओके या अपने एनी ग्लासवेयर उसमें पैक करके कुछ फ्रीज करो या फ्रिज में रखो यही करती हूँ मैं अपने घर में ओके Mhm. and as much as possible avoid plastic packaging. It takes time to shift out of this habit we've got into in the last 15-20 years, but it's easy once. And वो सारे पुराने डब्बे पड़े हुए हैं आपकी एटिक से निकालिए यूज करना शुरू कीजिए आपको कॉस्ट भी बच जाएगा प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट्स जैसे जैसे बीपीए थैलेट लीच होता है वो कमजोर हो जाता है क्रैक्स आता है एंड बहुत जल्दी रिप्लेस करना हो okay so it's much more cost effective to shift to metal glass packet metal especially. There's one very pertinent question here relating mainly to overseas tourists. There's an attendee who's written, I host cultural and culinary experiences for foreign travelers in India. Many guests are afraid to drink anything but bottled water. Some even use it to wash their hands. I want to reduce plastic waste, but we don't have access to trusted refill stations. How can I educate them about safe water options without making them uncomfortable? I mean, I know with we also have a lot of interns from various American and German institutions working with us. And initially, when they come in, yes, we give them some gyan. We share a lot of scientific literature with us. We are a scientific group. But yeah, maybe making brochures, raising awareness, and of course, going out on social media and talking about this openly. More of us talking about this openly. There's a lot of content on this on social media, but a more louder voice would be useful. Okay, to raise awareness among your clients who demand packaged drinking water. Okay, yeah, it's eventually it's a personal choice, like cigarettes or vodka or packaged foods. I mean, it's a personal choice. Very challenging. You can just raise awareness. Don't mind. Don't get depressed over the other people's choices. Try to work with them positively. Okay. Mm-hmm. And but we've seen this change when you go out to eat in a restaurant. Earlier, we used to ask, are you using filtered water, AquaGuard, whatever? Now it's a given that they'll use the reverse osmosis process water that is served to you. So Yes. maybe it's a good idea, and that is not used in many countries apart from India. It's a good way to educate guests about the RO systems that we have, the reverse osmosis process. So maybe that's one way of looking at it. Let me just take a look at. Someone has asked, is it safe to use unrecycled plastic for repeated use for food packaging with the eco No, barrier in no, between? no. No. No way. Yeah, please don't do that. Okay. Yeah. Yeah, avoid it as much as possible. Okay. I'm just looking at the similar vein of questions on tourists facing hygiene concerns when it comes to using eco-friendly products. How can we help them experience it? So, I mean, it really depends on you, okay, and how you showcase yourself. Okay.
And convincing is not very difficult at all. Okay, go back to our traditional dress systems. Okay, even that the systems we followed for cooking, jotha, it came from thousands of years of surviving epidemics. Okay, from avoiding disease transfer. Okay, so let try and showcase practices that are safe for us, for our families, which we've inherited. And trust me, it's not very easy to kind of sometimes change ourselves, but it's fairly easy to communicate the change. Okay, it's not very difficult. Okay, Mhm. it just comes really easily once you start practicing it. Okay. Right. Yeah. There's another question, Soumya. I'm just keeping a look on the time as well. Beyond basic composting, what are the innovative strategies for managing food waste from hotel buffets and restaurants? And can these strategies create new revenue streams or community benefits? Excellent question. Excellent question. Okay. We have a lot of these biogas composters now available, various designs, especially in southern India, okay, that you can adopt for where you have very large quantities of food waste. Okay, and the methane that's released from composting can then be harvested for cooking gas. Okay, and the sludge that comes out can be used for composting. It's much more efficient than simple composting, but you would need really large quantities of waste to generate biogas for a hotel industry. Okay. You could also then absorb waste from residential colonies, societies into your biogas composter. If you need much more larger quantities of waste for your biogas composter, or if you just need a little bit of biogas, then you could do with whatever waste you generate. Okay. Mhm. And you will have a lot of savings in terms of cooking gas as well. Okay, you can go to zero fossil fuel adopting these strategies, okay, and bring in huge savings. Huge savings. Soumya, thank you so much for doing this for us. It's given Thank us, you. very basic, simple solutions and something we know in our heart, but probably haven't started, doing ourselves or influencing others to do. I just wanted to quickly check if we have Dr. Atul Patne with us, Secretary Tourism, Maharashtra. Dr. Patne, a warm welcome to you and thank you for taking the time from your very, very busy schedule. We are immensely grateful to have you with us. And as I said when we started this webinar, that this is a series of 6 that we'll be doing. Do let us know what you want to say to everyone who's attending the webinar, sir. They would love to hear from you. I welcome all my participants and the panelists on this question of responsible tourism rather. I was planning actually sustainable tourism earlier, but then I thought that it is a more wide terminology, more wide term that apart from the sustainable, the responsible tourism encompasses many other things also. So the responsibilities of tourists and responsibility towards tourists. These are the two things which we are expecting from you, the panelists. And I hope almost all my officers from MTDC and director have joined here and they are listening to the conversation which is going on. Sorry, I joined late actually. And even those who are small homestay owners and tourist guides, वो भी यहाँ पे होंगे. तो मैंने पहले भी सुचिता को रिक्वेस्ट किया था कि ऑल द कन्वर्सेशन ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग शुड नॉट बी हेल्ड इन इंग्लिश ओनली, क्योंकि बाकी हमारे जो स्टेक होल्डर्स है मेनली Of जैसे course. दो जो आर इन वाटर ट्रांसपोर्ट और होम स्टे और टूरिस्ट गाइड ड्राइवर एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का बीच बीच में जायका जो है हिंदी और के साथ भी जरा देंगे तो दे विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ पर जो है under our policy, I would like to share few things. We have identified total 43 sectors which need actually intervention from the government side. In which this access audit, safety audit, wayside amenities, responsible tourism, sustainable tourism, and science campaign. These are the six important things which we are focusing upon. Under this, today we are discussing about the plastic garbage and especially the cleanliness drive, etc.
So which comes under responsible tourism, but at the same time, sustainable tourism, when we propose many things like promoting electric vehicle charging station at our resorts, then promoting caravan, and then we will have STP at empty resort, and parking will be matlab at minimal charges, etc. Then plastic collection at beaches and from the sea, we can take help of fishermen. It can be participation of the fishermen community because they are also one of the most important stakeholder in water tourism, whether it is a dolphin sighting or snorkeling or water sports, adventure sports, etc. Fourth one is that earlier also in my capacity as a secretary fisheries, we started a campaign to remove the ghost net, which are very important, which is very important aspect because olive rillet or shark or dolphin, they are also get affected. Indigenous species is also affected due to ghost net. So removal of ghost net from the sea will be taken. And then the blue flag beach, we have also taken the campaign of declaring the blue flag beach. So ultimately what happened, just like a tiger project, tiger is symbolic of the at the food chain. Similarly here also blue flag beach, many other things will follow in that line. And then solarization of MTTC resorts using the non-conventional energy, but especially solar, where the MTTC resort can be shifted to this solar energy. Second important aspect was about the use of animals for maybe for the transportation, maybe for tourism purpose, like camels, horses, etc. And whatever the wastage are there, they should that should be responsibility of the animal. Horses है, camels है, उनकी वो shit वहाँ पे पड़ रही है. Even there was a news about this Matheran resort because there is a I may say cartel or racket of horse owners. So they will not allow people to use other mode of travel. लेकिन पूरा मतलब घोड़ों के कारण जो है पूरी गंदगी फैली हुई है, मतलब लोगों को नाक दबा के आगे चलना होता है. इट इज ए अंडर द सेंसिटिव जोन ऑल्सो. तो लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल दी गई है, टॉय ट्रेन दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये सब चीजें जो है वी हैव टू टेक केयर कि जो भी लोग सी बीच पे घोड़े चलाते हैं या कैमल चलाते हैं तो उसके बारे में कैंपेन चला रहे हैं. क्योंकि एक स्टडी भी है कि इसका जो है जैसे कबूतर का एक स्टडी है, वैसे इनका भी है कि इनका जो घोड़े का एक्सीटा है विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द हेल्थ. तो ये सारी चीजें जो है समुद्र के लहरों का आनंद उठाने वाले लोगों को तक पहुंच रही हैं. एंड अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस. एंड लास्ट वन इज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स का जो है उसको कम करे, टू कर्टेल, टू कंटेन और टू जस्ट टू बैन इट. वेदर इट इज सोवेनियर शॉप और फ्रूट्स और स्ट्रीट फूड, वो पैक करके प्लास्टिक में दे देते हैं और लोग खाते पीते. जैसे कच्चे आम को काट के नमक के साथ जो है प्लास्टिक में डाल के दे दिया, भुना हुआ उबला हुआ भुट्टा प्लास्टिक में डाल के दे दिया, और वो खाने के बाद जब खत्म होता है वो सीधा लोग वैली में या कहीं तो भी विथ प्लास्टिक फेंक देते हैं. प्लास्टिक की बोतल जहाँ खत्म होगी वहां डाल देते हैं. Availability of dustbin is one thing, but at the same time creating some stakeholder who can collect the plastic and they can use it for recycling or even for plastic fuel like thing. So ये एक जो है इसके तहत जो है पॉलिसी के तहत हम वी आर सपोर्टिंग इट थ्रू आरटीजीएस ऑल्सो. तो जहां जहां डिस्ट्रिक्ट में ये सब आइडेंटिफाइड किए जाएंगे, चाहे वो 50 डेस्टिनेशन जो हमको तैयार करने हैं, फोर्ट्स पे है, टेम्पल्स पे है, बीचेस पे है वगैरह, तो वहां पर इस तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करे. और करे इसके लिए एक और कंसेप्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो में से एक मॉडल हम चुनेंगे अभी, लाइक एसपीवी, एंड विच विल बी रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली कि जो वहां पे क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट ऑल दिस मीनेस, अबाउट एनिमल मीनेस है, उसका प्लास्टिक पोल्यूशन है, ये सारी बातों को एक करेंगे. और साथ में पैरेलल जो है हमारा एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है फॉर टूरिस्ट गाइड है, ड्राइवर्स है, होम स्टे वाले हैं, रिसोर्ट वाले हैं, इन सबको दिया जाएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो एजुकेट पीपल एंड टूरिस्ट बोथ कि भाई यहाँ पे आप कचरा ना करें, यहाँ पे ऐसा मत कीजिए, ताकि वी शुड कीप ऑल ओवर डेस्टिनेशन क्लीन. इट शुड बी a symbol of sustainable tourism. So that's all from my side. Thank you so much, sir. It's so heartening to know about the policy changes that you're making. देखिए, आप लोग अगर गवर्नमेंट के तरफ से डायरेक्शन आएगा, that is when people will start following. So very, very grateful for that, sir. And Dr. Prasad's webinar today was first in a series of 6 that we have conducted. Thank you everyone for joining us. We made a note of all your questions that we could not answer today, and we will send this to Dr. Prasad and try to get you your answers.